आप नाम से ही यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 20। तो ये 20 क्या है? दे 20 आर डिफरेंट नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। हम कई इस तरीके से फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो वन सच प्लेटफॉर्म और फोरम इज एक्चुअली G20, जहां पर 19 अलग अलग कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस और डिबेट वहां पर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर इश्यूज हमें G20 में इस इंटर गवर्नमेंटल फोरम में जो देखने को मिलते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डील करते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी कि क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट से चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो कि हाल ही में बहुत ही प्रोमिनेंस ले चुका है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं और चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस भी लिए जाते हैं। आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये ग्रुपिंग की जरूरत क्या पड़ गई थी। हम कई रीजनल ग्रुपिंग्स की भी बातें करते हैं, हम कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं, तो G20 की जरूरत हमें कब महसूस हुई? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से मार दी हुई थी, और यूरोपियन कंट्रीज जो कि आज हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड देखे जाते हैं, एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही मीगर हो चुके थे, बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही वीक थे। तो ऐसी जरूरत हमें महसूस हो रही थी कि हमें एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत थी, हमें चंद ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सही तौर पर मेंटेन कर सके, कोऑर्डिनेशन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड सही हो सके। और उससे रिलेटेड सबसे मेजर डिसीजन हम ऑलरेडी देखते हैं, विच इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो चला हुआ था 1944 में, जिसके रिजल्ट के सबब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। तो ऑन द सेम लाइन महज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टेब्लिशमेंट होना काफी नहीं था, इस तरीके के और भी कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी थे। तो उसी सच नीड में से बाहर आया हुआ एक कॉन्सेप्ट था द ग्रुपिंग ऑफ 20, इट इज G20। तो G7 जो थे वो नेशंस ऑलरेडी जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड जो नेशंस थे 1970s में उन्होंने उनकी बैठक हुई थी, और G7 वहां से हमें एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। मैं आपको आगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो G7 के इनिशिएटिव से जो है सबसे पहली बार हमें G20 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो रहे थे 1990s में, और एशियन इकोनॉमीज जो थे वहां पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखा रहे थे। तो यहाँ पर G7 नेशंस को पता चल गया कि अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को सही तौर पर मेंटेन करना है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को अगर हमें सही तौर पर मेंटेन करना है, तो हमें जस्ट डेवलप्ड नेशंस नहीं, हमें डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में एशियन कंट्रीज जो खासकर इंडिया, ब्राजील, इस तरीके के जो इवन साउथ अमेरिकन नेशंस भी जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंस दिखा रहे थे, वो डेवलपमेंट में बहुत ही आगे जा रहे थे। तो इस तरीके के नए नए मार्केट्स को भी साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी था। उन्हें इंपॉर्टेंस पता चल गया कि इस तरीके के जो नेशन से वो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। सो दिस एक्चुअली पेव्ड वे फॉर द फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो वहां पर कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन साहब जो थे वो सबसे पहली बार चेयरमैन की तरह चूज किए गए थे फॉर दैट इनॉग्रल सेशन। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये थी कि 1999 में G20 का आइडिया जो पूरी तरीके से आता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, लेकिन वो बहुत ही इरेगुलर था, यानी कि उसे पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म उसे नहीं दिया गया था। तो सबसे दूसरा मेजर जो डिसीजन आता है एज फार एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ G20 इज कंसर्न, वो 2008 में आता है। आप सभी को पता है 2008 में पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और खासकर यूएस जैसी कंट्री भी बहुत ही मजबूर थी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड लीडर्स को फिर से पता चल गया कि नहीं, और खासकर G20 लीडर्स को, कि वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस इकोनॉमी, इन दिस मार्केट। तो जाहिर सी बात है हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बिल्ड करके ही, और हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर जब तक हम डिसीजंस नहीं लेंगे, हम एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर को सस्टेन और सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही वो मेजर डिसीजन था 2008 में, जहां पर G20 लीडर्स ने एक यूनाइट डिसीजन लिया हुआ था, ठान लिया हुआ था कि वो हर साल एनुअली मीट करेंगे इन समिट्स पे। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस समिट्स द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंटिन्यू टू मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर। तो हर साल जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं कंट्रीज के, यानी कि अगर किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है और किसी कंट्री में प्रेसिडेंट्स, तो वहां पर ईयरली एक समिट होता है। मैं वो समिट्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट समिट्स, हर साल जो है 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज के वो मिलते हैं, एजेंडास वगैरह वो डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होलिस्टिकली आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से G20 का इजाद हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 जो कि उस टाइम फ्रेम में 1973-75 के आसपास ऑलरेडी वो डेवलप्ड थे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर ये फर्दर लेकर आगे जा रहे थे इंटरनेशनली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का, एक ऐसा ऑर्डर बनाने का जो सर्वाइव और सस्टेन कर सके। और 1997 में रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया था और इसे G8 का ग्रुपिंग दिया हुआ था। और फाइनली 1999 में हमें G20 का ग्रुपिंग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज को कलेक्टिवली G20 का मेंबर कहा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज G7 और G8 नेशंस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की आर एक्चुअली द G20 मेंबर्स। तो यूरोपियन यूनियन का भी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, इन सभी को G20 का ग्रुपिंग कहा जाता है। तो देयर आर फ्यू परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज भी जिन्हें रेगुलरली इसके समिट्स में बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन, एशिया, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वन अगेन साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्हें भी यहाँ पर एज अ परमानेंट गेस्ट इनवाइटी बुलाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, IMF, और खासकर स्पेन की खास बात है, स्पेन इकलौता ऐसा कंट्री है जो परमानेंट गेस्ट इनवाइटी की तरह G20 के समिट्स को हाजिर होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो बाकी के भी आप देख सकते हैं न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज की तरह बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्रूशियल G20 इनफॉर्मल या फिर G20 ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छी बात है सर, तो हमें इस तरीके के क्या बाकी के भी कंट्रीज या फिर इस तरीके के ग्रुपिंग्स नहीं है क्या? एशियान भी है, सार्क के भी बारे में हमने बात किया, ऐसे कई हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? G20 किस लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता है? तो G20 बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, खासकर हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में, सिक्योर हमारे फ्यूचर बनाने में, खासकर एज फार एज आवर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड। क्योंकि यहाँ पर आप आंकड़े अगर देखें तो G20 मेंबर्स जो जितने भी 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, वो सभी मिलाकर 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को वो रिप्रेजेंट करते हैं और 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को वो इकलौते रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 ग्रुपिंग इतना सिग्निफिकेंट है और पूरी दुनिया जो है वो रुकती है देखने के लिए कि G20 का मीटिंग क्या चल रहा है और वहां पर आउटकम क्या था, एजेंडा क्या था, डिस्कशंस क्या थे। क्योंकि वर्चुअली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो, ग्लोबल GDP का हो या फिर ग्लोबल एक्सपर्ट्स का हो, वो हमें इन G20 नेशन से ही देखने को मिलता है। और G20 काम किस तरीके से करता है? देखिए, प्रेसिडेंसी जो है वो हर साल रोटेट होती है अमंग ऑल द मेंबर्स। तो 19 जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो है उनके बीच ये प्रेसिडेंसी जो है वो इवॉल्व होती ही रहती है। और खासकर यहाँ पर आपको एक टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रॉइका। Troika, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor are also known as a Troika to ensure the continuity of the agenda. तो हर 3 साल के लिए जो है ऑलरेडी मेंबर्स को चूज किया जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस ट्रॉइका को जो है वो मिलाकर 3 साल के प्रेसिडेंसीज दिए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि करेंटली इटली, जिसने पिछले साल ही G20 समिट को होस्ट किया हुआ था 2021, अभी करेंटली 2022 इंडोनेशिया बाली में हो रहा है और 2023 इंडिया न्यू दिल्ली में जो है ये होस्ट होगा। तो इन 3 कंट्रीज को मिलाकर ट्रॉइका कहा जाता है। तो एजेंडा जो G20 इटली में सेट करता है वो इंडोनेशिया और इंडिया में भी कंटिन्यू होता है। तो बाद इनके अगेन 3 ट्रॉइकास को चूज किया जाता है जो कि फर्दर आगे नेक्स्ट 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे और इंपॉर्टेंट से एजेंडास डिस्कस करेंगे। और G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। हम सार्क की बात करते हैं, एशियान की बात करते हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहीं ना कहीं होते हैं, सेक्रेटेरिएट्स होती है। यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता, इसीलिए इसे बहुत ही यूनिक और डायनामिक माना जाता है कि जिस कंट्री में जो डिस्कशन होता है या फिर जिस कंट्री ने होस्ट किया हुआ होता है वहां पर नया सा सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, क्योंकि जहां पर वो एजेंडा जो डिस्कशंस किए गए हैं वो उसी कंट्री से ही इनिशिएट किए जाते हैं और वहीं से दे मेक श्योर दैट दे ऑल आर फुलफिल्ड। Agenda and the work coordination is completely by the G20 leaders' personal representatives known as शेरपास। तो हर कंट्री अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है चूज करके। तो इंडिया ने अपने शेरपा को जो है पीयूष गोयल साहब को चुनकर भेजा हुआ था, एंड टुगेदर विद फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये तीनों पोजीशंस बहुत ही क्रूशियल है। रिमेंबर, एक तो शेरपा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री को, ठीक है, वहां पर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स उस G20 लीडर्स के मान लेते हैं कि इंडिया
इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंट देने के लिए कहीं ना कहीं पीयूष गोयल साहब को भेजा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और सेंट्रल बैंक गवर्नर, हमारे यहाँ तो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो शक्तिकांता दास साहब, तो ये तीनों बहुत ही क्रूशियल होते हैं इस G20 के वर्क के लिए। तो इसी तरीके से 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी अपने इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस भेजता है। और प्रेसिडेंसी का सिलेक्शन कैसा होता है, अभी हमने देखा अच्छी बात है, ट्रॉइका है, हर 3 साल एजेंडा चेंज होते हैं, कंटिन्यूटी के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्ट किस तरीके से होते हैं। तो 19 कंट्रीज जो पूरे हैं ना, उन सभी को 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया गया है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट कंट्रीज है, तो उसे किसी ग्रुपिंग में नहीं रखा गया है। तो ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप एवरी ईयर, द G20 सेलेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स अलग अलग रीजियंस को रिप्रेजेंट करते हुए आपको देखे जाएंगे। तो हर ग्रुप में से, अलग अलग ग्रुप में से एक एक कैंडिडेट को पिक किया जाता है, ताकि वो क्युमुलेटिवली एक साल के बाद प्रेसिडेंसी चूज की जाए। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो ग्रुप 2 का हिस्सा है। तो इस तरीके से इन 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में से, कंट्रीज में से चुने जाते हैं, यानी कि वही कुछ चुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट प्रोसेस है, वही कंट्रीज ही चुनते हैं अपने बीच में से कि कौन जो है वो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देगा। तो अब तक जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट से G20 समिट्स हैं उन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप सभी को पता है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉलोड बाय यूके लंदन, एंड देन थर्ड समिट जो था वो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स पिट्सबर्ग में हुआ था, फोर्थ कनाडा टोरंटो में हुआ था, फिफ्थ समिट जो था वो साउथ कोरिया सियोल में हुआ था, सिक्स्थ फ्रांस कैनिस, सेवेंथ मेक्सिको में था, और एट्थ रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, नाइन्थ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, 10th टर्की में हुआ था, और 11th जो था वो चाइना क्वांगजो में हुआ था, 12th G20 समिट जर्मनी में था, और 13th G20 समिट अर्जेंटीना में था, 14th जापान ओसाका में था, 15th सऊदी अरेबिया रियाद में था, और 16th इटली रोम में हुआ था हाल ही में ही। तो हर G20 समिट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट से डिक्लेरेशंस और डिसीजंस लिए ही गए थे। तो बहुत ही क्रूशियल हैं ये सभी समिट्स। तो अभी एज ऑफ नो 2022 के लिए जो कि 17th समिट चलने वाला है, वो इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है करेंटली, विच इज इन बाली। तो 2023 के लिए जो कि इंडिया जो है जिसने होस्टशिप एक्ट की हुई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अभी जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में आपको कहा कि हाल ही में ही कैबिनेट के इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे कि सेक्रेटेरिएट कहां पर होगा, कौन कौन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, वो सभी एलोकेट और असाइन किए गए हैं 2023 के लिए। और 2024 के लिए भी एक्सपेक्टेड है ब्राजील। अभी कुछ फुल फ्लेश कहा नहीं गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ट्रॉइका यहाँ पर तीन कंट्रीज जो मिलकर काम करते हैं। तो 19th समिट जो है वो एक्सपेक्टेड 2024 ब्राजील कर सकता है, और 2025 के लिए साउथ अफ्रीका कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द लीडर लेवल, हाईएस्ट लेवल जो के समिट्स ऑलरेडी चलते हैं, जहां पर कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स भी यहां पर होते हैं। तो 1999 में सबसे पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। ऑफ कोर्स सबसे पहला स्पार्क यहीं से आता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल मीटिंग जो शुरू हुए थे वो 2008 से हुए थे रेगुलरली। तो 1999 से ही फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग स्टार्ट हुए थे, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स। 2010 में से और थोड़ा एक्सपेंड करके लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स के भी मीटिंग्स रखे गए थे G20 कंट्रीज के। 2017 में फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग्स भी रखे गए थे, और 2012 से ट्रेड मिनिस्टर्स या फिर कॉमर्स मिनिस्टर जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी G20 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स रखे गए थे, और सिंस देन कंटिन्यूअसली वो चलते ही रहे हैं, और चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस वहां पर भी होते रहे हैं। And apart from all these ministerial level meetings and apart from all these highest political level meetings, G20 engagement groups भी मेंटेन करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रुप्स को, बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है वो B20 ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, 2008 में से एस्टेब्लिश किया गया था, और 2010 में से रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। तो लेबर से रिलेटेड भी ट्रेड यूनियंस और अदर एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यहाँ पर इन 20 कंट्रीज या फिर इन 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिजनेस के, वो वहां पर एंगेजमेंट ग्रुप्स की तरह वहां पर आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेशंस और समिट्स चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L20 जो था वो 2008 में फाउंड किया गया था, और उसे रिकॉग्नाइजेशन 2011 में मिला था। C20 दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ होते हैं इन 20 कंट्रीज में, उनके लिए भी एक फोरम बनाया गया था, फिर एक एंगेजमेंट ग्रुप, जो कि 2013 में इसे एक रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी वही 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। थिंक टैंक्स, जो ग्लोबल थिंक टैंक्स होते हैं खासकर हमारे G20 कंट्रीज के, उनके लिए भी एक एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था।
वुमेन, खासकर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो है 2015 में W20 एंगेजमेंट ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया था, S20 फॉर साइंस एंड रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड फाइनली U20 फॉर अर्बन रिप्रेजेंटेशंस, जो कि मेयर्स और गवर्नर्स होते हैं मेजर अर्बन सिटीज के। G20 में जितने भी मेजर बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं उन सभी के गवर्नर्स और मेयर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पर एंगेजमेंट के लिए G20 एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है। और फिर हम एक बार देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है, क्यों ये सबसे हटकर है। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ऑफ कोर्स 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हम देख सकते हैं, अच्छा खासा जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन दुनिया का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इनकी मदद से। कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एंड मॉनिटरी स्टिमुलस, मैंने आपको कई बार कहा कि फिजिकल जब वर्ड है इट इज रिलेटेड विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, और मॉनिटरी जब वर्ड है तो इट इज रिलेटेड विद सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री में भी, इंडिविजुअल कंट्री में भी जो टैंडम होता है, जो फिजिकल फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो उसकी सेंट्रल बैंक के बीच, वो भी कोऑर्डिनेट हो सही तौर पर, उसका स्टिमुलस भी आगे बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीज में ही तो उन्हें फुलफिल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात G20 की यह है कि ये फ्लेक्सिबल है और इंक्लूसिव है। नो डाउट हर साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है, हर 3 साल में एक बार एजेंडा चेंज किए जाते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और सभी का इंक्लूसिवनेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो कंट्री होस्ट करता है वहीं पर सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है और वहीं पर से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पर लिए गए हैं वहीं से उसका काम शुरू होता है। लेंडिंग में भी बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो G20 के कंट्रीज ने रखा हुआ था वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिस्ट्रक्चर ही करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में भी। डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत ही जबरदस्त सा स्कोप मिला हुआ था यहाँ पर लेंडिंग्स वगैरह के लिए भी, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट्स कई साइन किए गए, क्योंकि G20 कंट्रीज जब समिट्स में मिलते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट्स भी साइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बहुत जबरदस्त सा होता है। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज टू बिग टू फेल। अभी हमने जितने भी आंकड़े ऊपर देखे हुए थे, 60% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इसके किस तरीके से है, तो ये बहुत ही बड़ा है फेल होने के लिए। यानी कि दैट वेरी ह्यूजनेस इटसेल्फ इज मोर देन इनफ कि ये रेसिलिएंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है या फिर एक रेसिलिएंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कहने के लिए। और चंद इंपॉर्टेंट से इश्यूज जो अब तक G20 ने एड्रेस किए हुए थे, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे, टैक्स और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जिन्हें हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ और एंटी टेररिज्म पर भी मेजर इश्यूज जो थे उन सभी के बारे में G20 के अलग अलग समिट्स में हमने डिस्कशन देखे हुए थे। और सिंस कोविड तो ग्लोबल हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया जो कि 2023 का होस्ट होने वाला है, तो कौन से प्रायोरिटी के एरियाज हम देख सकते हैं जो कि इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, या फिर इंडिया इन पर फोकस जरूर कर सकता है। टैक्स एवेशन से रिलेटेड इश्यूज हम हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में टैक्स एवेशन बहुत ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। फाइट अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर जगह पर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज कम, इन्होंने बहुत ही कोशिश की हुई है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस इशू को लाने की, दैट इज टेरर फंडिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। क्योंकि इंडिया खुद प्रॉब्लम फेस कर चुका है इससे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए। कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर माइग्रेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये कहावत भी है कि पूरी दुनिया में आपको हर कोने में कहीं ना कहीं एक चाइनीज और एक इंडियन देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल रेमिटेंस से रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत कॉस्ट कट करवा सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारी टैप करने का यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है हमें। की ड्रग्स पर हम मार्केट एक्सेस के लिए भी बात कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स ये तो एक्टिवली ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ब्रिक्स का भी हिस्सा है, तो वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से नए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑलरेडी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन पर भी हम रिफॉर्म्स लाने की बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, रियल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलते हैं UNFCCC के, वहां पर बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जरूर किए जाते हैं, लेकिन रियल एक्शन वहां पर नहीं होता। तो इंडिया ने भी ऑफ कोर्स हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में हुआ था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 प्लेजेस दिए हुए थे। तो हम इस तरीके के इश्यूज भी वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि वी डोंट नीड द टॉक, वी नीड द वर्क।
चैलेंजेस क्या क्या है ओवरऑल G20 ग्रुपिंग में अगर हम बात कर सके? नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल यहाँ पर हम डिस्कशंस तो जरूर चलाते हैं, लेकिन उसे एनफोर्स किस तरीके से करेंगे ये मैकेनिज्म हमने अब तक नहीं बनाया G20 में। नॉट लीगली बाइंडिंग, आज के जमाने में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल फॉरम्स, प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं इज एक्चुअली द वॉलेंटरी नेचर ऑफ देयर अग्रीमेंट्स। वहां पर अग्रीमेंट्स तो साइन किए जाते हैं, बड़े बड़े बातें तो वहां पर की जाती है, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, यानी कि वो रिकमेंडेटरी नेचर पर होती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मोस्टली ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना, ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड तो सबसे बड़ा हर्डल, अगर नॉट जस्ट G20, दुनिया के आगे अगर कुछ था तो वो ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना था, रिफ्यूलिंग और फ्यूलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड जो कि कंटिन्यूस लॉकडाउन वगैरह पड़ रहे थे, तो इकोनॉमिक रिकवरी, जैसे कि रिसिलियंट इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि जितनी मांग उसे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी वो बाउंस बैक करेगा। तो इस तरीके की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में क्या सोचेगा G20? डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी बात है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर डिजिटल लिटरेसी ज्यादा हो, लेकिन जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ज्यादातर जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस ग्रुपिंग में हम इंडिया, सऊदी अरेबिया, इस तरीके की कंट्रीज भी देखते हैं, तो वहां पर डिजिटल रेवोल्यूशन हम कैसे लाएंगे? क्लाइमेट चेंज रिस्क सबसे बड़ा एज ऑफ नाउ। अभी हाल ही में भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स भी आए हुए थे, तो उसे किस तरीके से डील करेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। इसके आगे प्लास्टिक से रिलेटेड भी हम मुहिम चला रहे हैं, तो लेट अस वेट एंड वॉच। और ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, स्पेसिफिकली जो कि अभी हमने देखा कि टैक्स एवेजन जैसे प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क की बहुत ही जरूरत है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, जो यूनानिमसली ये सभी G20 कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और ये लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए। तो वे अहेड क्या हो सकता है इसका? टिल नाउ अगर सच बताएं तो G20 व्हेन कंपेयर्ड विद अदर रीजनल ग्रुपिंग्स या फिर अदर इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स बहुत ही सही ट्रैक पर जा रहा है, कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर रहा है। क्योंकि बाकी अभी सार्क के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाकर जरूर देखें, तो वहां पर भी हमने देखा कंसिस्टेंसी ही नहीं थी वहां पर। तो इस तरीके का काम G20 में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट से डिसीजंस ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले भी रहे हैं, इवन दो दे माइट नॉट बी लीगली बाइंडिंग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा सबसे मोर इंपॉर्टेंट वे अहेड जो होगा, स्टडी ऑफ चेंजिंग डिमांड फॉर स्किल्स। ऑफ कोर्स स्किल्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। इंडिया जैसा एक कंट्री जो कि सेकंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन वहां पर स्किल के लेवल्स बहुत ही कम है, लगभग 40 से 45% के आसपास ही है जिनके पास एडिक्वेट स्किल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो G20 नेशंस किस तरीके से इस पर काम करेगा? मोस्टली दिस कैन बी द नेक्स्ट वे अहेड। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए खासकर जो है पॉलिसीज वो बना सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और रीडिफाइन करने की हमें जरूरत है कि एरिना क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के। ऑफकोर्स हमने देखा कि अंडर द अर्थ जो कुछ भी मिल रहा है वो सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, माना कि G20 एक फाइनेंस रिलेटेड, एक टैक्सेशन रिलेटेड, इस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्लोबल हेल्थ की भी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। तो रीडिफाइन करने की जरूरत है कि एरिनास क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के और किस तरीके से होंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे कंसोलिडेटेड एक वे अहेड जो G20 के लिए जो देखने को मिलता है, दैट इज लेस टॉक एंड मोर एक्शन। रेगुलरली वो मिल जरूर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, रेगुलरली फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह की भी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक्शन कितना हुआ है उस पर, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग के बारे में। Welcome to all. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. We are so happy to have you here with us today. Today is an auspicious day. Not only is it a day of Republic, but also we are celebrating or commemorating the launch of the G20 Youth Cabinet. G20, as you know, is a premier group that really meets not only for youth, but to really talk about all the issues around the world and how we can convene as one global community to make it best. We are so excited to have young people really having that voice, really carrying that mission. And today we start this. We will have many weeks to come listening to amazing youth ambassadors, different experts in their field, and different speakers that we have curated correctly to really bring you the best information.
We want you to join us every single week. We would like to be grateful to and thank our community partners. We will start with IIU because I am part of the core team. I am very excited to say that, again, we feel very, very special that we are part of this. Dr. Srividhya worked so hard to bring this information to all, and we really feel that it is our commitment to be where education is being. IIU is the largest e-platform around the world in more than 195 countries. Thanks to our visionary founder, Mr. Piyush Pandit, we can arrive to anybody in any corner of the world that has fingertips and a device. Quality education should be a fundamental right. Everybody should have access, knowing that 260 million people do not have access to education. IIU wants to eradicate all barriers and make sure that you have what you need in order to have the skills for this workforce. So IIU is your organization. I would also like to, let me find this really quickly. IGEN is the handle that won over numerous other suggested names. This is the generation that is the most important in the United States of America. Every person between the ages of 5 and 24 have been collectively dubbed the IGEN generation, a shortened descriptor of internet generation. You may think of and hear other names such as Z replacements. You may hear the Homeland generation, the Centennials, the Post-Millennials, the Founders. iGeneration or IGEN is the moniker that we will be using going forward for this amazing generation. A generation that has its own moniker because it's so unusually big and it's in every aspect of our history. Not only has it become the largest social cohort, it's also outnumbering baby boomers and millennials together. GSFN, and let me look for that one because I have it here. And I'm sorry. GSFN is an organization that promotes well-being amongst all financial institutions. We want to make sure that all of the members convene to really create the best atmosphere and the best advantages for all its members. We want to make sure that we use volume to create the best economic leverage. And we also want to make sure that we continue to be the organization that promotes economic sustainability. These are the community partners for the G20 Youth Cabinet. Thank you all for being here. And now I will pass it on to our host today. Thank you. Thank you so much, Dr. Virginia. And we all should thank Dr. Virginia in spite of being ill. She's unwell, but still, she just made her presence here. Thank you so much. And a very, very, very special thanks to Dr. Ramesh, who is already running a program of award ceremony over there parallelly. And it's going on. And still, he has really made his presence here to show that how committed he is for the youth. And definitely, if we are doing it, we are all doing it for the younger generation. Thank you, Dr. Ramesha. Thank you, Dr. Simi. Yes, Dr. Simi is again very committed. As such, is already preoccupied with some other program. As such, why all these things are happening, the reason I'll come later. And yet she said, I will be there, Srividhya. Don't worry. Please go ahead. So that's the spirit. Last, definitely not the least, definitely, Ermina. Ermina, who was running conferences through and through, and yesterday was International World Education Day, International Education Day, and she had speakers from all over the globe, and she was heading the conversation with Dr. Virginia, and still she is here amidst us for the sake of the younger generation. Thank you, Virginia. That's fabulous. That's really wonderful having you here. And also Dr. Renuka, who has been running a summit over there in Pakistan, and still she just wanted to make a presence here. She said, please go with Srividhya. We all will make it happen. You know, what does it mean? The spirit of oneness on which we are all sharing this platform today for the sake of the youth, the younger generation. When it comes to the younger generation, as we can see, IGEN Krishna, and I had seen a lot of participation from IGEN participants who are there in the YouTube. Thank you so much. Gudupadi Lakshmi and Mohammed Fayaz Alam and Karti Ishwari, Emilia Chale, so many, IGEN Danush,
I just picked up those who I could see on the screen. That's it. And also our panel of experts, Dr. Shahid Adibisi. When I just opened it yesterday, last evening, he said, please go ahead, Srividhya ma'am. I will be there to support you. So that shows the spirit of oneness on which that we are all sharing this platform today with you all. So with that spirit, today we are going to talk about G20 International Youth Cabinet, that we are going to take it forward to the community as such. And today is very, very special. 5 different reasons. That's why we just said that today we should have it. Why? Because look at the date 26/1/2024. If you add everything, it will come to number 8. 8 is the number of infinity. 26 is 8. 2024 is 8. Plus 1 makes it 8. As such, it's a day of infinity. So whatever you're going to venture in this day, it's going to have its infinite results. So on this day, we just wanted to have it. And 26/1/2024, or if it's not 26 January, is the Republic of India. What else could be the synonymous of having G20 International being launched on this day? And also, in other words, we are commemorating International Education Day and also International Day of Clean Energy. All put together, all are going to be the topics of G20 Youth Cabinet. On that note, I extend a warm welcome to one and all, wishing you for your gracious presence and your precious, priceless time that we are having you with us today. On that note, please allow me to share my screen. Should be able to share it. Here I go. Yes. So this is what is whole G20 cabinet is all about. Let me start the slideshow. Yes. So G20 International Youth Cabinet welcomes you all with the agenda of 2030 Agenda and Development, where our presidency is going to be enable, implement the 2030 Agenda for Sustainable Development and ADDIS ABABA Action, that is AAAA. So we have done the schedule. As such, the schedule will be run through the event later. So we are having the virtual launch on this day, and it's going to be started on the 4th Feb. I mean, the first session that we are going to have is on the 4th of Feb. So moving ahead. So what is this G20 is all about? It's a premier forum for international economic cooperation. It is essential in shaping the strengthening the global architecture and the governance of major financial issues with the world population, world trade, world economy, and carbon emission in focus. So the G20 is an international forum of significant countries to address economic cooperation, global financial stability, climatic change, global health, architecture, sustainable energy transition, digital competition transformation, and much more. There are about 19 countries which are participating in it. On this platform, there are going to be more than at least 195 countries are going to participate with us. So moving ahead, we are going to work with the theme of One Earth, One Family, One Future, that is our sincere commemoration to Vasudhaiva Kudumbakam on this great day of 26 January 2024. And it's an ongoing process that we are going to celebrate here. It's an awareness campaign initiative with which we are going to contribute, we are going to collaborate with all the youth members of the society, such that we are going to welcome all youth to voice out their voices, to just manifest or exhibit their projects that they are working on, to take it forward to the world, so that we will be able to move forward with their voices that are being met with. So G20, it started with G7. Probably we have started with G15 now, because 15 countries were enrolled with us, and G7 became G8. Finally, it became G20 last year when India has its presidency. So these are the members that we are going to work with. Generally, all these countries in focus. To name a country, you can see the flags of the countries which are there, but still there are going to be more and more countries who are going to be partnering with us. With the world population, we are going to achieve about 65% of the world population, 79% of the world trade, 84% of the world economy, and 79% of the world emissions that we're going to talk about. And what does G20 do exactly is that the policy coordination between the member countries to achieve the global economic stability and sustainable growth, and to promote the financial regulations and reduce the risks.
and prevent future financial crisis, and to create a new international financial architecture. As such, moving ahead. So our key priorities are Vasudhaiva Kudambakam, as I mentioned, with the focus area of climate financing, coordination of the crypto assets, energy transition to renewables, and women-led development. And it's an engagement group to start up with 20 to recommend actions on how to address the growth challenges and other constraints between all the countries. So the chronology, as I mentioned, it was started in 1999 and then moved to 2008, 2022, and then 2023 was the last meeting. So the next meeting is here with all. And this is our logo. Hope you all like our logo, where we are going to talk about the 5 P's. So that's what is the thing. And with the people, prosperity, peace, partnership, and planet. These are the 5 P's. These are the 5 focus of G20 International Youth Cabinet, which we just made it as a design for our vision. Such that we'll be pointing out, we'll be talking about only a sustainable developmental goals. Moving ahead. Sorry. So, what is going to be the G20 mission? As I told you, the 17 SDGs. We all know about SDGs, so I'm not going to go about in detail as such, and we'll be hearing it. It's a pleasure for us to hear it from the younger generation always, week after week. Such that, what is the highlight of the session is that you can see there is going to be an assessment page where these projects that the younger generation is going to be presented, is going to present here, is going to be evaluated in that assessment page. That's what's the key thing, and they will be facilitated on this. So moving ahead, kindly help me to present the scheme and planner before you all. So 4th of Feb, we are going to talk about Education 360, where our presidency is going to be ensure inclusive, equitable, quality education and promote lifelong learning opportunities for all. This is a presidency that is going to be addressed on the 4th of Feb. Second, on the 11th of Feb, we'll be talking about Shakti Spectrum, talking about women empowerment, and IGEN Global. That means youth empowerment, where our presidency is going to be talking about with a focus on a paradigm shift for individual development to leadership-led development and community partnership, such that we don't want to say our younger generation to give job to others or to go. They are not going to be job seekers. They all will become job givers. So that's going to be addressed on the 11th of Feb. And then thirdly, on the 18th of Feb, we are going to talk about digitalization and innovation with science and stream, which is focusing on the employability, that is with the NPR production revolution, that is with the presidency of initiate, innovate, incorporate, integrate innovation through skill to workforce towards a sustainable growth. And on the 25th of Feb, where we are going to talk about energy resources towards sustainability and employability, where our presidency is going to talk about efficient and sustainable use of natural resources with 3 hours dialogue. On the 3rd of March, the following week, we are going to talk about heritage wealth with a focus on agriculture and food security, where our presidency is going to talk about consolidate health priorities and achieve convergence in the health cooperation and integrated action with the global view of GVC patterns and opportunities with the role of policy. On the 10th of March, we're going to talk about entrepreneurship and MSME with the presidency of modernizing and strengthening the industrial units to make it globally competent and sustainable. On the 17th of March, we're going to talk about financial inclusion of financial architecture and international growth, where our presidency is going to highlight on accelerated, inclusive, resilient growth in business. Sorry about it. On the 24th of March, we're going to talk about international taxation with trade and investment and exports and imports, where our presidency is going to talk about reform, reshape, restructure, reconstitute the international trade fabric and international tax architecture. On the 13th of March, we're going to talk about heritage, culture, and tourism. Last but not the least, on the 7th of April, we're going to talk about 2030 Agenda of Sustainable Development with ADDIS ABABA ACTION, where our presidency is going to talk about accelerating program towards SDG for an ambitious
G20 Action Plan. Thank you so much. Thanks for bearing with me. I should stop sharing my screen now, where I'm going to forward the mantle to Ms. Ermina to welcome our Hello, everyone. Yeah, 1 second, Ermina. Yes. Ermina's screen. Okay, I do that. Yes, thankfully. Successfully I've done it. So over to Madam Ermina to welcome our panel of experts. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you, my dear. Thank you. And I congratulate you again for this initiative that reminds us that we have a huge duty to fulfill, saving the planet, saving the environment, and to let a healthy planet and healthy environment for the next generation. I have the privilege to welcome and to present the panel of experts today of G20 International Youth Cabinet. I will start with Dr. Virginia Rivera, Dr. Lakshmi, who is every day here, Dr. Zakira also, Dr. Renuka Thakore, Mr. Anush Srivastava, Professor Dr. Jose Luis Esteves, Dr. Temiado Adoshu, Professor General Eboria Charles, and Dr. Adebisi. Welcome to all of you and congratulations for being in panel of experts. Thank you, my dear Srividhya. Thank you so much. So we extend a warm welcome to all our panel of experts once again, along with Madam Ermina, Dr. Virginia, Dr. Renuka Thakore, and a few more people are going to be added in our experts. That's what I'm here to say. And Dr. Terry Mayo, Dr. Lakshmi, Dr. Zakira, Professor Charles, Professor Jose, Dr. Jose, and Dr. Adebisi. Thank you so much. That's really a great pleasure having you all eminent personalities on this platform with us. And I'm sure we're going to have a wonderful session. Yes, now I would like to invite people to speak about this. Dr. Ramesh, we'll start with you. Thank you. Thank you so much, Dr. Srividhya. It was very happy moment partnering with IGEN Global. So very happy note that I am a little surprised and wondering how you are coined program plan and structuring all. It was very nice because IGEN, which we are taking care of the activities in one model, but your action plan is totally linked with maybe G20 or COP or the global concept note is there. So that concept note, how we would like to give back our suggestions, that is what which you are looking on, my point of view. So all the programs will be designed in such a way that is actually really needed. For example, today it is initiated G20 Youth Cabinet. So the outcome of this and all the days, the title also which is planned, and it is also linked with the submission, the recommendation which we are going to give. Maybe only one recommendation which was talked in G20, maybe in the coming year or next year, that will be what our success. So our hard effort will capture like that in a way. Maybe coming G20 or next G20, one of our recommendation, maybe you can give some 10 recommendation or 9 recommendation. That is what my suggestion after the youth cabinet. So this recommendation, any one recommendation, not to implement, just for consideration, if it is taken as the in G20, that day we will be a very happy moment. Maybe it will happen. There is no doubt in that. So because that is what the right spirit. I never seen a program like discussion related to G20 other than the government which is taking care. Other than the government, I hope we are the team which is touching on G20. It is good. I hope that you are also already having good connectivity with our
community, Indian community, Jay Shankar sir and team. I hope so. Very happy, ma'am. Very happy, and IGEN also always with you. And it is not like IGEN, ADU, and IIU, whatever it is, but it is now we all collectively together. So, like collectively together, we can move forward. So that some places where you are good, some places where we are good, some places other one team is good, because we are very strong in volunteering opportunity, very strong in student community. As I told you, we have 35th Energy Saving Club we inaugurated. We have 35 institutions with us now. All 5,000 students, Energy Saving Club members are there. And each Energy Saving Club, one chairman is there. So 35 chairmans are there, student chairman. 35 student secretaries are there, joint secretary, treasurer, like that. Couple of teams are there. So that is taking care by Krishna and team. So the idea behind this is how we can integrate good things, best practice in IGEN to be taken, best practice in EDU Global, best practice in other organizations. Collectively, we can able to come out with a very strong. But with my humble again request is every session we would come out with one recommendation. Maybe February 4th we are starting. So end of the session, it is mandatory we need to have one strong recommendation, one line recommendation. Like that, some 10 program, 10 recommendation we will get. We will consolidate, then again we will have one closing ceremony session like this. That session, we will discuss again all recommendation, maybe 20, 30 recommendation, we will cut short into 6 or 7 recommendation, then we can communicate to the G20, the overall team. That is what my view. That's great. That's a wonderful suggestion, sir. Definitely, that everyone's blessing. Since we have started on the day of infinity, we will have more and more youth ambassadors, if not the adults, at least the youth ambassadors having a representation in the G20, the next G20 session, wherever it is. Sure, we shall work on it. Sure. Thank you. So thanks for the suggestion. Thanks for your prestigious presence amidst us today. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, sir. Ma'am, you can just relieve me because I have another program that program is going on. I need to continue there. Thank you. Thank you. Dr. Shahid Adibisi. Dr. Shahid. Yes. Yes, Professor, please. Yes, good afternoon, good morning, everybody. I am happy to be here again. I'm sorry I won't be able to share my face. I'm somehow on the cultural transit now, but I think you can. I can contribute to this very program as a usual. Like the first speaker has said, I think the program is well packaged and full of content, and also the concept of it is very apt. And yes, I am participating in some of the UN activities that happen to meet with the countries that are G20, T20, the think tank, and I have attended some of the conferences of a high level like that. And I think this very event or program, it acts as such. And what I will advise is that there is always, at the end of the program, there is always a communication that directed to strategic offices. I think I have been able to advise on this as well, because it is until when everything that we have discussed and also recommended pass to the head of state or strategic organization that can use it, that is when we have made a good connection to people that will take action on them. And most of the presentations and also the ideas contributed on this platform has been very wonderful, and they are rich solutions. So I think we should be looking forward to do that, and that would be very wonderful, because they are waiting for such communication or report. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Well, we would like to hear it from the younger generation now. Anybody from IGEN? Like I could see Jessica, would you like to say something? Hello. Hi. Yes, I think this is another
Secretary has already started the implementation of youth in the conversation. And I think just being a part of another youth-centered initiative is just goes to show how much we're really pushing the future generation into the limelight and not just a supporting role, but now they're the main actors, if that makes sense. And I think that just comes to show how much we're really gearing for a much cleaner, safer, educated future that could really just bring the best of the best to fruition. So I'm excited for this. Thank you, my dear. Madam Tedemiyo Adeloju. Anybody else? IGEN Krishna, would you like to say something? Krishna? Yes, ma'am. Yes. Good evening, everyone are present here. Happy to be a part of G20 Youth Cabinet. Youth, they are the future of next generation to lead further of everything. With this code, we will organize together with all the partnering organization, NGOs, and all. Happy to be a part of this Youth Cabinet. And thank you for giving opportunity again and again for IGEN and all youth members to be a speaker. It's not a thing, not a small thing. This is a big mountain like we have kept in their mind. I'm very happy to giving opportunity. Thank you, and congratulations to all the speakers who are going to be in the future in G20 Youth Cabinet. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you so much. Dr. Zahira, would you like to say a few words? Only a few words, ma'am. Just a minute, ma'am. Actually, I was in travel. Hello, ma'am. Good evening, all. Yeah. I'm again happy to be a part for this G20 Youth Ministry. So we'll do our best from IGEN. We will have a good speaker again for this one. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Dr. Renuka? Yes, ma'am. Okay. Kuripudi lecture. We'll come back. I have been here since morning 4 o'clock. Eating, doing everything on computer. Anyway, thank you very much. Dr. Srividhya and Dr. Simi Mishra, IGEN Krishna, whoever here are part of this program, welcome and thank you very much for having me as well. And it is so interesting that we are being motivated or led by very enthusiastic leader, Dr. Srividhya here. And I also see Dr. Simi Mishra joining her footfall and like always supporting the activities. And so it is very encouraging. So yeah, G20 is very important because 70% of the population or more belong to G20 countries. And within that, probably we can say that we stand for youth because most young people are also living in these countries. The problem in our G20 is not about resources, not about the capacity. It is about the opportunities given to everyone and the support to be innovative through these opportunities. And probably opportunities might be also available, but they remain silent or maybe focused on one or the other issue. Here, this platform opens up for everyone around the world, and no one is, limited. Even if you are not qualified, or you are not experienced, you are experienced, and so on. So that is where I think GSFN, IGEN, and many others platforms who have joined here
are having a stake. Providing opportunities to everyone, leaving no one behind is the core principle. Also, we want you to get engaged with high-level dialogues or high-level discourses going around the G20 countries, so that you can be informed and take these decisions for your future. And so we can collectively, co-create our sustainable future. And that is what I always think, that without networking or without having such open opportunities, we cannot progress collectively. So it is for your individual progress as well as collective progress. And so thank you very much for joining, and be connected all the time. Thank you very much. Thank you, Dr. Renuka. Yes, before we sum up, Armina. Ma'am, Yes, good evening, Dr. ma'am. Srividhya, ma'am. Yes, Yes, I'm sorry, ma'am. I didn't see the message. Now only I have seen the message and joined. Sorry for delay. Oh, lovely to have you. Really, thank you, ma'am. Thank you so much. Would you like to say something, ma'am, please? Yes, ma'am. We are very much thankful to IGEN Ramesh sir, who made us to join in this event, and also we are very much thankful to you also, ma'am. You are very much active and making us to participate in all the events. So initially, I joined as a speaker along with you, with your team G20 as a speaker, and now I am being acting as a program coordinator. Yes, a program coordinator for COP, and also for this G20. Again, we will be working as a team. On behalf of IGEN, we will be joining with you as a team. Thank you so much for considering us, ma'am. Very true. We all together will make this event a grand success, ma'am. Thank you, ma'am. That should be the spirit. Thank you, ma'am. As you rightfully mentioned there, you joined as a speaker and you voiced out your views, and now we are taking it forward to the younger generation. You're going to present your students to voice out their views, and we are going to make it there definitely. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Yeah, welcome. And Ms. Armina? I want to wish you all good luck. I am sure that will be great speakers. Will be announced soon. All my dear Srividhya will announce. We have great leaders, global leaders here, and a lot of surprises. Then be with us. Be with us. In every session, we will come with something new. We will come with changes, because we are all change makers. And what can I say? Today is also the Republic Day in India, and I want to tell to all of you, all of these beautiful people of India, Happy Republic Day. Thank you, my dear. Thank you so much. I should really make a mention about Armina now. This is the fourth time she has gone out and come in. Like it's our internet connection is so bad. Believe me, this is the fourth time that she has come in. That shows the commitment that she is. Okay. Alam, can you please stop this, please? Always there. Yeah, I know. Yeah, exactly. Okay, so thank you so much, Ms. Armina. Thank you. That's really wonderful having you here. And with all your spirit, and your spirit is infectious, I know that. So with all the spirit, and we all will work together, we'll definitely take it forward. Thank you so much. On that note, definitely last but not yes, Tajimi. Yes, ma'am. Please. Please say something, please. Yes, please. The podium is all yours. Thank you. Thank you. So I am Temi Diadoloju from Lagos State University, Nigeria. I'm so glad for the opportunity to be among high-level thinkers. And, they always say that youths are the leaders of tomorrow. But with this program, it's more or less that youths are being made leaders today. Yes, it's an avenue for making our youth the leaders, and we all are actually here to learn and to gain from ourselves. And it's a very good opportunity. I personally can't wait for the different editions to unfold and for me to benefit, and also for others to gain and for us to impact our world sustainably. Thank you very much, ma'am. True. Bring as many speakers as you can from your country, ma'am. Please. Thank you.
I could see two of the speakers who have joined, Zuben Kalyan and Haripriya. Would you like to add on? Zuben Kalyan, would you like to speak something about G20 project, Youth Cabinet? Okay, Haripriya, would you like to say something? Well, with that, we have come to the close of the session, and definitely it's time to hear from Dr. Simi Mishra. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for calling me to give the vote of thanks. So before I start with the concluding words, I think first of all, congratulations is due to EU, UK, Global, GSFN, IGEN, and Internship University, and the R&D Creativity UCLAN for inviting us all to this wonderful event, which is the G20 Youth Cabinet. Let's all proceed, I think, with one mind, with one goal, to work selflessly for the world's welfare. May our acts also kind of come to a noble ideal for those who come after us. And may this ethos that started in India just, like about a year back, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, awaken in every soul, and be put into practice and bear the fruit in everyone that is there. May we all also realize that the world where there is endless peace and harmony, and that can happen only by kind of coming together and working together. So the G20 Youth Cabinet basically is a youth cabinet which Dr. Srividhya talked us about, the key focus areas. And I think it is a very well crafted program where economic stability, growth, financial regulation, trade investment, development, climate change, sustainable development, health, digital economy, and so many other areas have been very well thought of and put together, and is a place where countries which are having the largest populations of youth in them, it's important to note that the G20 achievements can actually result in a consensus building and make its member countries and representatives from the youth in various priorities that may evolve over time. Now, what I want to kind of carry forward is that G20 has strikingly emerged as a very strong, pivotal, multilateral, trying to and also having a lot of impact on the decision-making powers to shape the geopolitical realities around the world. And in this journey, the important goals and milestones for the global community to act upon have always been there. But if the youth come forward, I think this strong developing community can incrementally become more and more strong, more and more empowered, and therefore shape the future development and growth house, which is the powerhouse of the world. And we should try and kind of enable the youth as much as is possible. Now, this coincides with a day which is of of great national pride to India, as we celebrate today India's Republic Day. And therefore, I think it holds, like Dr. Srividhya was saying, it's a wonderful way, 5 different ways in which this day is important, and infinity and the power of infinity is always kind of blessing us. So over the years, I think that, the G20 has put forward its basket of economic and developmental agendas, which are critically important for the future growth and sustainability. And as we kind of, go forward in the direction of becoming a global geopolity and converge on multilateral cooperation, I think aligned to this, a range of stakeholders invested in development initiatives are eagerly looking at the youth in the various parts of the world. And this is because a majority of the countries that are participating in the G20, which is not just being kind of, now restricted only to the global north, the global south is also a very strong partner. So we feel that, the financial regime, the need for collective action, and the need for sustainable development requires joint efforts in addressing socioeconomic issues that are plaguing so many of us in so many different ways. So having said that, I think it is time to kind of, again,
bring our attention to the fact that a lot needs to be achieved, and it can be achieved only through a meaningful partnership mechanism on the lines of SDG 17, which needs to critically be evolved for pursuing the G20 objectives for development. I'm hoping that the launch event will be was just one of the events and many more in the string that is coming all through till April. So towards a very successful G20 in 2024 and towards a very successful G20 Youth Cabinet, here's wishing us all a very, very happy and a very, very strong, initiative that has taken birth today. Thank you. Thank you so much. Yes, that is a wonderful. Well, we do agree with you, Dr. Simi. Definitely, it's going to be a wonderful start, and it's a wonderful start for the year 2024, isn't it, Miss Armina? I am sure of this. I am so sure. So, yeah, no doubt. No doubt, yes, exactly. And of course, we are all meeting tomorrow and keeping our fingers crossed for the next Sunday, exactly, for the first session of G20 with our most beloved topic on Education 360. So we're going to talk about education, and see, look at the smile, look at the flashy smile which brightens up the whole podium when we talk about education. So it lives with us and we breathe us. That's the actually food for us. And imagine we're going to get it from the youth members. That's going to be the cream of it, exactly. Hearing it from the youth, the younger generation. So definitely coming together is beginning, working together is a process, and staying together is success. And we have proved the success of it for the second great event of G20 from COP 2030. Thank you so much. Let's keep united and keep this platform more precious and so dear to our heart, such that more things can come up for the sake of the community, the sake of the youth generation. And with the motto that this is going to be of the youth, for the youth, and run by the youth. That's how we're going to take it forward. Thank you so much. On that note, we leave you all. Adieu from each one of us here. Thanks for your valuable time, and we really appreciate it. We love you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. And you know what is so important? That you bring together leaders from all the corners of the world, and you create a team, a fantastic team. We are a team here. True. Yes, very true. Very true. Very true. We'll take it forward. Sure. Thank you. Thank you, dears. Thank you. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to each one of you. Thank you.